जी के भविष्य से मिलवाती हूँ। ये वो हैं जिन्होंने पहली बार प्रोग्राम अटेंड भी किया और पहला लाइव प्रोग्राम एंकर भी किया। ये वो हैं जो कभी हिंदी तो कभी अंग्रेजी में लिखते हैं। ये वो हैं जो स्कूल में पढ़ने के बावजूद काव्य से इतना प्रेम रखते हैं कि 150 किलोमीटर तक गाड़ी चलाकर आते हैं। ये हैं लिखिता काव्रू। ये लिकी डॉल के नाम से लिखती हैं। इनकी हाल ही में एक पुस्तक भी पब्लिश हुई है अंग्रेजी में। उसके बारे में हम इनके मुंह से ही सुनेंगे। और ये इंग्लिश लिटरेचर में मेजर कर रही हैं, लेकिन यकीन मानिए मुझे तो लगता है ये इंग्लिश लिटरेचर में मेजर हैं। पर बहरहाल ये इंग्लिश लिटरेचर में मेजर कर रही हैं और इनके शब्दों की मिठास न सिर्फ इनकी कलम बल्कि इनके मुंह से भी आती है। सो लिखिता, लिकी डॉल, the Mahalakshmi of Poetry and Literary Group, how are you? We are honored to have you. And is your friend joining with you? She will be, ma'am, in a minute or so. Okay. I am so sorry for the delay, but thank you so very much. I'm doing great, ma'am. Thank you. How are you doing, ma'am? I am absolutely fine, and I am enjoying talking to all the key people of the Poetry and Literary Group who have brought the group thus far. And with you and Jayatee and all the young breed, I'm sure this group will go places. और एक दिन तुम लोग ऐसा कुछ एपिसोड शायद 1000वां मना रहे होगे और हम लोगों को, बूढ़ों को तुम एज वेटरन्स बुलाओगे और हमें शायद तब तुम्हारे नाम याद नहीं होंगे, लेकिन हम कहेंगे हाँ हाँ पीएल तो याद है, तो उसी में मिले होंगे हम तुमसे। तो हमारी यही दुआ है। जयती आओ, जयती प्लीज अपना माइक और कैमरा ऑन करो और हमें मिलो। नमस्ते जयती। जी, नमस्ते। अनुपम जी, आप सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जी, जयती को इतनी स्कोप दिया इस मंच पे, and I'm really thankful to the whole Poetry and Literary Group for giving them a chance to present their views and their creativity on this platform. And I would like to thank mainly the technical experts who have not been on the screen, but they have been off the screen. But I have seen the presentations which have been really great. मैं तो इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद दें, Mr. Amir and the group, the whole group who has been cooperating that way. Thank you very much. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए। लेकिन मैं Thank आपसे you. बताना चाहूंगी जरूर ये बात, और शायद किरण जी भी आपको यही बात बताएंगी कि जयती और लिखिता जैसे ही बच्चे हैं जो हमारा अपनी संस्कृति में विश्वास सुदृढ़ करते हैं। हमें लगता है कि हाँ, हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य, हमारी परंपराएं जो हैं वो इनके हाथों में हमेशा संभली रहेंगी, कभी गुम नहीं होंगी, लुप्त नहीं होंगी। जब जयती एंकरिंग करती है, जब लिखिता कविता पढ़ती है, तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई छोटा बच्चा पढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि कोई साहित्य का प्रेमी सच में काव्य पाठ कर रहा है। तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पीएलजी को जयती जैसा हीरा दिया, और लिखिता तुम्हारे माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें लिखिता जैसी महालक्ष्मी दी। हम लिखिता को अपने ग्रुप की महालक्ष्मी बुलाते हैं सर। ये महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की जोड़ी है, लिखिता और जयती की। Such an honor, ma'am. Such an honor. Thank you so very much. Thank you. Thank you. Now बहुत बहुत धन्यवाद आपके ये शब्द के लिए, और एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके आशीर्वाद सभी समय इन पर रहे। ये बहुत जरूरी है लाइफ में, बड़ों के आशीर्वाद, ये आगे बढ़े इसके जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके आशीष से ये बच्चे सचमुच में इतिहास रचेंगे। तो आज इंटरव्यू लेने की बारी मेरी है और आंसर देने की बारी तुम दोनों की है। तो लेट्स बिगिन विद यू लिखिता। What has the journey with PLG been?
thus far. I know you were the anchor of the first program. किरण जी प्रणाम. नमस्ते, माफी चाहती हूँ 2 मिनट लेट हो गई. जी बिल्कुल नहीं. हाँ लिखिता बताओ, how Yes, has ma'am. your journey been? To be honest, I think it was around 7 years ago, 8? No, I guess it's 7 years ago. I remember I was in an age where it was very hard being around adults, and I had no friends at all. It was like I was a lonely loser who only played around with her father, and my dad was and is my only friend. Back when I was 11, I started writing poetry back then, and my mom always made sure she went through internet and she made sure to bring up maybe competitions or any kind of platform to put me out, maybe to display this little work of mine. Talent. And yes, ma'am. And one day she happened to find a number. I mean, she happened to find a post and she found a number. She called. A gentleman attended the phone and he spoke to her. He was glad to accept new poets, new talents, and the very next day I realized that I was in an organization which was meant for poetry and literature. And the fun fact here is the gentleman who attended the call was Tufail sir. He was the one who took me in. And ever since then, I was jam-packed with memories that I can never forget, to be honest. It was a very good experience. History was created that day. Like I think Tufail Bhai is used to doing. He creates history wherever he goes. Very true, ma'am. Very true. Wow. So Jayatee, how did you get onto the bandwagon of PLG? और आप और किरण जी कैसे जुड़े? किरण जी आप छुपिए मत. आज आपका ऑन स्क्रीन टाइम है. आज आप बराबर जवाब देंगी. हाँ जरूर देंगे. नहीं मैम, इसमें मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि ये पीएचडी से ग्रुप में ज्वाइन करने की पीछे एक छोटी सी इंसिडेंट आप बोल सकते हो. मैं और किरण गए थे किसी बुक स्टोर में एंड इन सीबीडी एरिया इन मस्कट, एंड हमने देखा वहां पर कुछ फॉर स्पीकिंग इन पीएलजी कुछ आइटम कुछ प्रोग्राम था. And then I came back home and I asked, why Jayatee, आप क्यों नहीं इसमें participate करते हो? And that is how it all happened, started. As far as I remember, अगर याददाश्त ठीक है, तो हमें इसी से ही पहले मिला, चांस जानने का चांस मिला. उसके बाद तो काफी साल गुजर चुके हैं. शायद ये कौन सी ईयर हो? 2019. तो 2021 में हम हैं. हम दोनों ऐसे कुछ किताब लेने के लिए किसी दुकान पे, तो हमने आपके वहां पर पोस्टर देखे और आई एनकरेज है. और आज भी मैं इसको सब टाइम एनकरेज करता हूं कि मस्कट डेयरी या कोई भी ये में यू पार्टिसिपेट. प्राइज विनिंग इज नॉट अ मेन सो ये, और बट यू पार्टिसिपेट एंड दैट विल हेल्प यू. तो ये मेरा सब टाइम इसके प्रति ये रहा कि आप पार्टिसिपेट करते रहो. यू विल लर्न समथिंग, यू विल नो समथिंग. और जिस तरह हमारे पेरेंट्स ने हमें गाइड किया है, हम इसी को बिलीव करते हैं. थैंक यू. सॉरी इंटरप्ट किया. नहीं बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया जी, बिल्कुल. और तब से एक इतिहास आपके साथ जुड़ गया. आप जयती बताएंगी. जयती आप इसके बाद बताइए कैसे हम लोग गए. हाँ बेसिकली तो पापा से कह रहे थे सीबीडी में जो बुक स्टोर था, या सीबीडी मस्कट का एक बहुत फेमस एरिया है, वहाँ बुक स्टोर में एक्चुअली एक पोएट्री रेसिटेशन कॉम्पिटिशन था. वहाँ पे हमें स्कूल में पता चला कि कॉम्पिटिशन है, मैंने नाम दे दिया एंड आई वेंट टू पार्टिसिपेट एंड देयर it went very well. I won the 3rd prize in that contest. In 2019, I recited The Muddlehead by Ogden Nash. It's a very famous poetry, you know, और मुझे बहुत पसंद थी at that point of time. So I recited that. I won the 3rd prize. और वहाँ एक gentleman थे, Mr. Nitin. I still remember him. उन्होंने आफ्टर द प्रोग्राम कहा कि ये लड़की है, मतलब इसमें कुछ है, पता नहीं उनको क्या लगा, लेकिन उन्होंने मम्मी से कहा कि देयर इज दिस सो एंड सो ग्रुप. पापा भी उस दिन लाइक लेटर ऑन मम्मी पापा गए
उन्होंने कहा कि there's this group जो ISC में बहुत पहले ही शुरू हुआ है, थोड़े दिन पहले, आप उसे ज्वाइन कीजिए। एंड देन उस समय एक्चुअली मैं 13 इयर्स की हुई नहीं थी। 13 इयर्स वाज द मिनिमम, हाँ, जो लोअर लिमिट है PLG में ज्वाइन करने के लिए। जुलाई में मेरा बर्थडे था, दिस हैपेंड इन मई, और जुलाई में मेरा बर्थडे था। 12 जुलाई वाज माय 13th बर्थडे। 13 जुलाई को मम्मी ने तुफैल अंकल को फोन किया, and that's where everything started, that's where the train started, and we never know where it's going to end. तो वो फिजिकल था, इंडियन सोशल क्लब, वो ISM इंडियन स्कूल मस्कट में एक कमरे का ये क्लब है जिसमें एक कमरे में PLG सीमित था। और कुकु तुमने पहला कविता कौन था? जी, पहली कविता PLG में मेरी पहला सेशन हुआ था, जुलाई के एंड में हुआ था, बिकॉज अपेरेंटली 13 जुलाई हमने अंकल जी को फोन किया था, एंड एंड ऑफ जुलाई वाज माय फर्स्ट सेशन। इत्तेफाक से वो मैथिली शरण गुप्त का सेशन था। और इतना अच्छा लगता है आज सोच के कि पहली कविता PLG में मैंने पढ़ी थी, चारूचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। उसके बाद सेकंड सेशन हुआ था सेल्फ कविता का ना। जी हाँ। उसके बाद सेकंड सेशन हुआ तो फिर सेल्फ रिटन कविता का, उसमें मैं भी गई, जयती भी गई, और उसके तुरंत बाद तो फिर ये पेंडेमिक हो गया और फिर ऑनलाइन शुरू हो गया। जी, और देखिए आपके इस उत्साह को देखकर ही तुफैल भाई ने PLG चिल्ड्रंस प्रोग्राम शुरू किए थे। ये आप बच्चों के उत्साह के कारण ही हुआ, और आपने सच में इतिहास रच दिया। नहीं, अहो भाग्य। ये सच में बताऊं, यहाँ जब मैं आई ना अनुपम जी, तो मैं क्या बताऊं, हम लोग इतना डिप्रेस हो जाते थे कि पहली बार जब मैं आई तो जयती सिर्फ यहाँ मस्कट में आई ना, तो वो खाली बंगला बोलती थी और हिंदी इंग्लिश। अब मुझे हंसी आती है उस बात को, तब मैंने इसे प्ले स्कूल में डाला, और उसके बाद जब वो घर आती तो उसके साथ एक चिट आता कि एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज वो अपनी मातृभाषा में बोलती है, और बंगला में कहते हैं ना कोई चीज को बिछा दो, तो ये वहां कहती थी पेटे दाओ, पेटे दाओ। अब कोई समझ ही ना पाए कि पेटे दाओ क्या होता है। तो मैं एक दिन इतना रोई, और सच में पहली बार मैंने इसके पापा से झगड़ा किया कि आपकी बेटी है, कौन आप लॉयलियन है, और ये इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकती है। उस दिन से मैंने शुरू किया इसके साथ तीनों भाषा बोलने की, हिंदी भी, बंगला भी, इंग्लिश भी। तो इसके पापा ने बोला ठीक है, हम अब इंग्लिश में बात करेंगे। आज मुझे हंसी आती है इस बात को सुनकर, जब सब कहते हैं कि उसकी हिंदी भी अच्छी है, उसकी इंग्लिश भी अच्छी, और उसकी उर्दू तो उससे भी अच्छी है। जयती ने हंसते हैं कि जयती को इंग्लिश आता है क्या, मुझे से पूछते हैं जयती को इंग्लिश आता है क्या, तेरी मम्मी अभी रोएगी। नहीं, मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ, ये लाइव प्रोग्राम है, दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर लिखिता ने इतिहास रचा था पहले ऑनलाइन प्रोग्राम का एंकर बनके, यंगेस्ट एंकर बनके, तो जयती ने इतिहास रचा था हिंदी और उर्दू 2 भाषाओं में एंकरिंग करके, और वो एक से दूसरी भाषा में इतनी सहजता से चली गई कि खुद कवियों को भी कुछ पल लगे समझने में कि अच्छा लैंग्वेज का शिफ्ट हो गया। और हमें ये भी पता है कि आपको एम्बेसी के रेसिटेशन कंपटीशन में भी प्राइज मिला था, हमें ये सब पता है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये खूबसूरत नन्हे फूल जो अभी खिल रहे हैं, these buds which are yet blooming, where will you take PLG? आप और बच्चों को साहित्य से जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? आप क्या कोशिश कर रहे हैं कि PLG आपकी एज ग्रुप में, और सिर्फ PLG इसलिए नहीं क्योंकि मैं मेंबर हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये साहित्य को आगे लेकर चल रहा है, लिटरेचर को लेकर चल रहा है। सो व्हाट आर योर ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, होप्स, एफर्ट्स? या बच्चों से या मुझसे? ये मैं दोनों बच्चियों से साइमल्टेनियसली पूछ रही हूँ कि आप क्या करना चाह रहे हैं और आप क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए कि जिससे PLG ग्रुप और आगे बढ़े। लिखिता फर्स्ट, आपकी एज ग्रुप में, आपकी एज ग्रुप में। Thank you for the honor, Jayatee. Elders first. Thank you, ma'am. Thank you. To be honest, that's a wonderful question, ma'am. For me personally, I feel the whole concept of literature, be it poetry or reading or being in groups like PLG, is like an escape route from
I know it sounds weird coming from me, who's just an 18-year-old girl, but it's an escape route from the harsh world or reality. There are monsters waiting out there, and it feels like a hideout to be taking the warmth of poetry or literature. It's a different pleasure, to be honest. There are times when Absolutely. I feel suffocated, like it's getting hard to breathe. It feels like something is holding on to you, like Absolutely. compressing all your thoughts and anything that enters your mind. But the minute I set them down on paper, surprisingly, I feel free. I don't know why, Yes. but I feel like the chains which are holding me are released. There may be Beautiful. many kids out there who feel the same way. There are many kids. To be honest, this is a personal experience. I have so many friends who write way better than I do, way better than I do. They are um, poets, they are writers, they have lots of work, and they are not able to find the thing in them to come out, to put it out, to display, or to show the world that there is a poet in them that is waiting to get out to the world and shout out that I am there, that I'm waiting to see the world from within you. There are many kids who are struggling to do that, and Yes. PLG is doing an amazing job finding kids, and True. like Tufail sir Exactly. said, it has Yes. started a children's program. I So am I would like really to, honored. Ma'am, I would like to encourage you to bring them to the PLG forum, and I we will would get them to the mentors who will encourage them, teach them how to come out of that doing cocoon my and absolute be best, the ma'am. Thank beautiful you. butterflies that you two already are. Jayatee, what do you think? आप तो अभी स्कूल में हैं, Personally, आपके तो मित्र होंगे. जी हाँ, पर्सनली जो लिखिता ने कहा, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट, बिकॉज personally, like Likhita was in the board class, the so-called board class last year. I Yes. am in a board class, and I can't Yes. speak much about elders because I don't know their viewpoint very well, but I know a student viewpoint. Likhita was in a board Yes. class, I am in a board class. Yes. And I mean, if I look at how last year, every point of time feels like there's nothing in life except the board exam. The only thing you have in life is the board exam. And today, the fact that I can still look simultaneously at my academics and also my inner self, I think the reason behind that is PLG. Beautiful. I have seen my dearest friends, I've seen them back in middle school, 7th or 8th grade. They had so much of potential in them. They had that thinker inside them, the philosopher inside them. But unfortunately, I have seen that philosopher die inside them just because they didn't have a means to vent it out. And today, I am thankful that I did have a platform like that. I did have PLG, that once in a week, just once in 7 days, I had somewhere to stay. Okay, ये श्री सुमित्रानंदन पंत हैं, इनकी ये कविता है और मुझे इनकी ये कविता कुछ ऐसी लगती है. The platform to say this meant a lot, and I just can't tell in words what it was like to vent out your feelings, your innermost feelings, and then go back to your academics where you could feel my only self is not my student self. I also have an inner personality, and that is not dying out. It's still alive. Beautiful. Just because of PLG. Beautiful. Very well said. Very well Very said. But beautiful, then very beautiful. no surprises there. No surprises there at all. What else could we have expected from you? Thank you. तो Thank you. एक आखिरी सवाल आप दोनों से, क्योंकि आज समय की बहुत बाध्यता है. माता पिता का क्या रोल है? क्या कहना चाहेंगे आप उन माता पिता से जिनके बच्चे आपकी तरह लिखते हैं, या अगर अभी लिखते नहीं है तो भी समझते हैं इन गहन बारीकियों को? जैसे जयती का मैं जानती हूँ, इनकी माँ ने इनको बहुत सपोर्ट किया, और किरण जी हमेशा वहां होती हैं. नहीं, माफी चाहती हूँ मैं, सिर्फ माँ नहीं, इसके पूरे परिवार का सपोर्ट मिला है. माँ फ्रंट पर है, माँ फ्रंट पर है, स्क्रीन पर है. लेकिन जब ये पैदा हुई ना, 4-5 साल की उम्र में इसने टैगोर और नजरुल को जान लिया था, क्योंकि दादी अक्सर चले, और कालिदास की शकुंतला से उसकी परिचय हो गया. 3-4 साल की थी तब ये लोगों से इनका परिचय हुआ था, और परिचय के माध्यम थी दादी. वो स्पीच बोलती थी, दादी उसको करेक्शन करती थी.
मैं इस बात से कभी इनकार नहीं कर सकती कि मैं स्क्रीन पर हूँ। पर इस 3 महीने की, ये 4 साल की थी, तो इसके पापा ने सबसे पहला किताब इसको बच्चों का महाभारत और बंच ऑफ एसी के हीरो लाके दिया। वहीं से इसकी साहित्यिक यात्रा शुरू हुई थी। वाह, बहुत बधाई जी। तो परिवार को क्या संदेश देंगे आप? आप दोनों के परिवार ने बहुत सपोर्ट किया, जयती के परिवार ने भी, लिखिता, and of course लिखिता, you wrote a book, right? Tell us about your book. I did. And tell us how your family supported you, because like Jayatee said, this was board exam, which back in the day we used to call torture class. 10th was torture A, 12th was torture B, according to us. In torture class, you were able to compile your anthology, and in first year you were able to print it. So what is your message to the parents sitting out there? Actually, ma'am, when I first joined the group, I used to travel to Muscat from Niswa for poetry meetings. Yeah. And I said through the journey, in the beginning. Yes, ma'am. And through the journey, I often used to get tensed and nervous, like, will they like my poem? Will they like me? Because I was a weird-looking child amidst a huge group of poets, big poets. They were really good poets. And I often got anxious after every session and before every session, to be honest. And once I was done, I used to come across a huge group of people who loved me and loved what I wrote. And the support they gave me was just, I don't find words to describe that. And after every single time a person spoke to me, they used to say, how are you traveling from Niswa all the way from there just to recite one poem and then leave? And they used to thank my parents for encouraging me and driving all the way to Muscat. The support my parents have given me, I really can't speak. I mean, I have no words to express that, to be honest. Even though I had really, really bad days, I had, maybe I could say the bad poetry days, they made sure they sugar-coated their compliments or their feedback to make me feel better, that I was doing okay and that I could do better. Their support is just remarkable, as a parent, I can say. One should always encourage children. Very true. Very true. Children to dream and then go reach out for those dreams. Even for my book, the support they've given me is just indescribable. They have given a lot of love and support. They made sure that they were with me through every step I've taken, and they made sure that they will pull me up when I fall, and that it's okay to fall and then stand back on myself. If I was struggling, they made sure they pulled me back up. Wow. I'm extremely grateful to... Likita, where is your book? Show me, na beta. It is there with you? It is, ma'am. Just a minute. I'm sorry for this. Okay. No worries. Till then, we can ask Jayatee what Jayatee feels parents should do. Because there are a lot of parents sitting out there, maybe don't even have an inkling what the children are capable of. So what is your message, Jayatee? By the time Likita gets her book, you can tell us about it. Firstly, on a personal note, over the past 15 years, I've understood quite a lot about what your family means in the journey ahead. And considering based on my personal experiences and seeing the world out there for these little 15 years, I mean, not too much, I'd say it's not necessary that every kid is good at poetry. They can be good at anything in the world. But absolutely, no kid is only good at academics. God has made every single kid in a way that they do have something that makes them different from the whole world. No one is completely like the other person. As they say, every soul is potentially divine. So every person has the divinity in them. Literature is something that doesn't just concern reading books. Literature can be in music, literature can be in dance, literature can be in anything you do. And personally, I believe that for the functioning of a human body, you need your brain, you need your heart. Science is your brain and literature is your heart. You can't live without one or the other. Wow. So for all the parents who are out there, spend time with your kid. It's not very difficult to understand what a kid is particularly good at, and let them go ahead with that, because no one is telling you to sacrifice academics.
I mean, not appreciating ourselves, but me and Likhita didn't sacrifice academics. We are still into academics. We are still going to school, I think. But side by side, do it. And as I said earlier, just don't let that inner personality die inside you, because that will be very tragic in your life ahead. Beautiful. Very well Beautifully said. said. Very well said. Very well said. Yes, Likhita, please show us your book, because unfortunately we are running out of time. What to do? Yeah. I am Is so that sorry for one taking difficult up day more for time, me? ma'am. No, you haven't. But it is one difficult day for me, because all my favorite people are coming one after the other, and I have to cut short my conversations with them because I have to move on to the next I section. understand, Please ma'am. I show us totally your book understand. and tell us This how is we my can book. get it. This is the book. Tranquil Turbulence. It's named Beautiful. Tranquil Turbulence, and it basically is the eternal peace that lies in the roughest waves of my mind. It's what I believe. Beautiful. I call writing poetry a vision beyond normal. Only a few people can get, a few people can do. So it's like whenever I close my eyes, I can see and feel another world, the only place that knocks at the door of my soul, letting the huge wave of loitering emotions flow out like a wave, which takes life as words in ink on the paper. That world shovels the best of me. That world what motivates me. This is out, ma'am, with all your blessings and support. Turbulence. Thank you so very much for. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you for staying with me through the journey. Noticeably, Thank you to the title Phil was an sir and Simi oxymoron. auntie. Thank you. Thank you very much. And you. God bless you for that. And God bless you, Jayatee. We can see you both have a great future ahead, and definitely with you guys in the group, Poetry and Literary Group has an extremely beautiful future ahead. You guys will create new landmarks. Thank you very much once again for joining us. Yes. I'm so sorry. I've been following through Facebook, and I've seen that everyone were interrupting you to take a minute. I would like to do that too. Please do. I would like to speak about how amazing you're doing, ma'am. It's truly a great experience being here with you. And I would like to express my extreme gratitude for having me here. Thank you so very much, ma'am. I had a great time with you. Thank you. Please don't express any gratitude. You rightfully belonged here. You and Jayatee and Kiran ji, you rightfully belonged here. You are the pillars. आप पिलर हैं पीएलजी के, आपके बगैर ये कार्यक्रम अधूरा है। नहीं, मैं पिलर नहीं हूँ। मैं पिलर तो ये लोग हैं, मैं पिलर बनाने का प्रयास कर रही हूँ। और बहुत अच्छा पिलर बनाया आपने कि अगले सेशन में शनिवार को मैंने प्रयास किया, आप सब लोगों से इजाजत लूंगी। मुझे जरूरी है यहाँ बोलना ये बात, 15 दिन से मैं प्रयासरत हूँ, और एक बच्चा, स्पेशल नीड का बच्चा आ रहा है अगले साल में, अगले शनिवार को। मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ, फिर आप लोगों से इजाजत लूंगी उसको लाने की। बहुत बधाई आपको इसके लिए, बहुत बधाई। और देखिए तो फिर भाई भी आ गए। आप उन्हें अवश्य लेके आइए, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी कि हम सभी लोगों को अपने प्रोग्राम में शामिल कर पा रहे हैं। पिछले 15 दिन से मैं प्रयास कर रही हूँ, और वो बच्चा इतना उत्साहित है, उसको स्कूल में कभी चांस नहीं मिलता है, और मैं उसे कभी किसी के सामने बोलती नहीं हूँ कि वो स्पेशल नीड का बच्चा है, और किसी को नहीं बोलूंगी। अभी बाई चांस बात उठी तो मैं यहाँ बता दूं। हम बिल्कुल भी हम मंच पे कभी नहीं बोलेंगे, और पीएलजी वो जगह है जहाँ पे किसी को चांस नहीं मिलता है, वहाँ पे वहाँ उसको चांस मिलता है। पीएलजी इसलिए सर, इसलिए मैं सभी को बोलती हूँ, और खुद को भी सिखाती हूँ कि पीएलजी एक ऐसा मंच है जहाँ, और मैं ये बात और बोलना चाहूंगी यहाँ पर कि ये पीएलजी के मंच पर हम लोग कितने पॉलिश्ड हुए हैं। मैंने तो शुरू से देखा है ऑनलाइन को, यहाँ से सीख कर अभी दूसरा काव्य मंच सुशोभित हो रहा है। मैं क्या गलत बोल रही हूँ अनुपम जी? दूसरे कितने काव्य मंच सुशोभित हो रहे हैं, सब यहाँ से सीखा है, यहाँ से पले बढ़े हैं, और सब दूसरे ऑर्गेनाइज में पीठासीन है जी। पर ये तो होना स्वाभाविक की बात है कि मैं आज की डेट में सिर्फ पीएलजी से जुड़ी हूँ और खुश हूँ। पीएलजी, ये तो स्वाभाविक बात है किरण जी
मैं हमेशा कहती हूँ कि जब एक बरगद उग जाता है तो उसके नीचे आप कितने भी पौधे उगाइए, उन्हें ना आंधी, ना तूफान, ना धूप कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो पनपेंगे ही, क्योंकि बरगद का साया है। तो हमारा तो बरगद हमारे साथ है, तो हमें और किस बात कितनी करनी। शाखाएं हैं, और जिस शाखा को मैं उड़लती हूँ, स्वैप करती हूँ, मुझे फल ही पीएल फल। जी का चेहरा नजर आता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगी बस और अपने दर्शकों, रिश्तों की, एक मिनट रुकिए आप, रिश्तों की परिधि में ना रह कर भी दिल के सबसे करीब हो तुम, मेरे लिए कोहिनूर हो तुम। वाह वाह वाह, वाह, क्या बात, बहुत खूब, Beautiful, बहुत खूब, beautiful. बहुत खूब, अगले बहुत अगले धन्यवाद। सप्ताह आप देखेंगी कि एक जरूर नया रंगमंच दिखेगा आपको अगले जी, सप्ताह एक न, शनिवार को। अब हमारे लिए इतिहास रचना रोज की बात हो गई है, एक आप भी रच दीजिएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों से जरूर बताना चाहूंगी अपने अगले अतिथि को बुलाने से पहले कि ये हमारा भविष्य है, और जब भविष्य इतने सशक्त हाथों में है तो आप सोचिए पीएल जी कितने स्वर्णिम इतिहास रचेगा, इसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते।